realized what different changes have been. So when we talk about new age social media, we need to also ensure and be sure about how do we communicate in that medium. Is social media only for social interaction? Is it only to talk, to socialize, to meet with friends, or to meet with your colleagues? Or is it very, very important to transfer information? Or is it a very important communication tool in today's time? What is it? So for every individual, I think the definition differs. Yeah. For people who use social media as a medium of only socializing, may think it as only a medium to make friends, to display, to talk, to just unwind themselves from their work or their studies or something. But as you go deep into it, you realize that this has become a very, very important medium to communicate information with different ways. So when we say there was a time when it was a direct communication of news, that main yahan bathi and I'm just talking about what information I want to tell you. Now the things have changed because they have become more subtle. They have become more indirect in terms of communication. So the things that I want to tell you right now using social media have become very indirect. So there is a very different methods to communicate with your social media followers, you say, or your audience, you say. Sorry, somebody is saying something? Go ahead. Okay, sir. Yeah, I understand most of us are not on mute. So I just have a small display to talk about. So we'll just do a warm-up session for 10-15 minutes where I just talk about some of the basic things. I'm sure most of us would be aware, and if we are not, that will just help us in warming up for the session for interaction further. I'll just display my screen. Please allow me to share my screen, Professor Bhavna, sir. Somebody please allow me. Saket sir, can you allow Sana ma'am to kindly? Yes, ma'am. Yeah. So the idea of talking about new age social media right now in today's session, why this is important is I feel we should also understand what is production in social media and how we communicate through language, through creative writing in that media. Ma'am, you can share your screen. Yeah, yes, sir. Not right now, it is disabled. Participant screen sharing should be on. So when you go to settings, there is a participant screen sharing. You can just enable that. Okay, ma'am, I'm trying it. In settings. Participant screen sharing. Okay, ma'am. Yeah. So one thing that is important, meantime, I'll just continue talking so that we don't lose the flow here. So we say, what is social media? Social media, there are different platforms these days, multiple platforms. Some of the famous ones that we talk about is, yes, Facebook. We have LinkedIn, we have Twitter, we have Insta. These are the most common and most popular ones. There are multiple others. We have different platforms for different usage. Basis the use. I have that now. Yeah. Is that visible? Visible to us, yeah. Yeah. Just Saket sir, ye mute kar dijiye, ye somebody. Yes, ma'am. Yeah. So we see what is more important. Time is more important in social media and platform. When I say time, I mean what time the information is flowing is very important. किस समय में इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस समय हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, becomes very, very important. Is it morning? Is it afternoon? What is happening? So, for example, you need to talk about a very important thing. And right now, in the world, there are multiple other things which are more important than your topic.
So you need to choose an important time when you want to communicate the information. Is it during an hour? So for example, there is a bomb found in Ghazipur in some market today. And during that hour only you want to communicate, you think that topic is very important for your own peers and for your own friends, and you want to communicate that topic. The importance of that topic or that news or that information becomes less if there is some other information more relevant to it. So the time of posting, the time of posting the information becomes very, very important there. Platform, you need to be very sure what platform for which information are you using. So we say, like I said 2 minutes back, there are different famous platforms right now. The Facebook, Twitter, LinkedIn, every platform has a different USP. Every platform has a different unique selling point that I mean. So Facebook is more for what? Facebook is more for, we say, social. It is more for connectivity. It is more for socializing. We say, हमें पता है मोटा मोटा किसके लिए है. We say Instagram. What is for Instagram for? It is for experience. It is an experiential platform. We say LinkedIn, very professional business. Okay, very to the point, pertaining to some profession only. We say Twitter. Twitter is more about opinions. So platform becomes very, very important when you want to communicate. You cannot communicate an information which is very irrelevant to the platform. So on a search engine like Pinterest, you're posting a very important information for people. It becomes irrelevant on that platform, right? So this is what I mean by time and platform. We say Snapchat. Snapchat is also very fun. So something very serious, you want to post about some profession, something, and you're posting it on Snapchat where your audience doesn't make sense to them. So these things become very important. On what platform, what information, what type of information, is it relevant? Is it a relevant time? Is it a relevant platform? Is the most important thing. I say, what are the techniques? So techniques are, I say, you need to have some inspiration about the topic, because that inspiration, where has it come from? Are you aware about what the competition is doing, what your competition is doing? If, for example, I am a news agency or a news platform, or say an entertainment platform, for example, what is my competition doing? And what is my inspiration to do that content is very, very important again. What are the current trends which are going on in the market? So what different are you planning to communicate? In your topic, what different are you trying to communicate? For example, I have to share so I'm sure all of us are from different fields, and some are from news, some are from journalism, some are from mass communication, some are from entertainment section. So just trying to cater to all kinds of people who are available here. So for example, just a small example. So there is a news that we want to communicate about changing times in COVID. What are the current scenario of COVID? Very, very simple, very basic topic, yes. But am I aware about, if I am posting it from my handle, am I aware about what my competitor is posting? What different I am doing? What is the current trend? Is there is something that I am posting which is already known to people? How am I different? Because irrelevant hone ka bahut chance hota hai social media. The moment it is irrelevant, it's gone. One swipe, chale gaye. Ek swipe ka farak hota hai. 1 second you get. And in that 1 second, you need to show your awareness, your inspiration. You have to be catchy. You have to be whatever we know that it has to catch. The second thing that I say about the technique is focus. So when you plan something, you need to write down as well. Why do we are taught that it is very important to write? It is important to write because you organize your thoughts. Whatever is coming to your mind, it is very important to organize it. These days we do it on our laptop, but yes, it is very important to jot down that, be it in your laptop, be it on your phone. People do it in their watches these days, kahin bhi. But you need to structure them down somewhere. Why planning is important? Random going, saaf dikhta hai ki unplanned hai.
Whenever you plan it, write down, there is a difference. देख के पता चलता है कि कितनी अच्छी प्लानिंग है, कितना अच्छा थॉट है. We say perspective. How one idea can be branched into many different unique ways. कि आपका आइडिया और आइडियाज में बदल सकता है. उसका आगे फ्यूचर स्कोप क्या है उस आइडिया का, वो भी बहुत जरूरी है. कि एक बार आपने अपना टॉपिक कम्युनिकेट किया और वो टॉपिक खत्म हो गया, नहीं, बट उसके आगे भी आपको फॉलो अप के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है. ऐसे कोविड का टॉपिक जैसे मैंने लिया कि क्योंकि सबको इजीली समझ में आता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि व्हाट इज द करंट ट्रेंड इन कोविड राइट नाउ व्हिच इज गोइंग ऑन. मैंने अभी एक टॉपिक पे पोस्ट किया, उसके बाद क्या, एम आई लीविंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर, वो बहुत जरूरी होना चाहिए कि ऐसा क्या होगा कि आगे मैं उस पे फर्दर लिख सकूं. That becomes very, very important. SM production, that I say, social media production, two things very important. What are the resources and what are the tools available? मुझसे ज्यादा आई एम श्योर द करंट जनरेशन हमें होगी, उनको मुझसे ज्यादा पता होगा because they are hands on with the medium these days. But resources क्या होते हैं? We have some checkers tool, कितना टेक्स्ट होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए कितना टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए. यूज अ क्रिएटिव हब. एवरी प्लेटफॉर्म हैज अ क्रिएटिव हब, जिससे आपको सपोर्ट मिल सकता है कि आप उसको क्रिएटिवली यूज कैसे कर सकें. आजकल एवरी प्लेटफॉर्म, एवरी ऐप, एवरी सोशल मीडिया चैनल हैज देयर ओन लाइब्रेरी. आप उसको इस्तेमाल करें. सिर्फ सब कुछ आपको नहीं करना होता है. देयर आर एडिटिंग टूल्स, देयर आर क्रिएटिव हब्स, देयर आर इमेजेस विच आर अवेलेबल. यू नो व्हेन यू पोस्ट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, देयर इज म्यूजिक आल्सो विच इज अवेलेबल. आपको कहीं से खरीदना नहीं है, आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, सब कुछ मिलता है. Grammarly, to correct your grammar also there is a tool. You have business content related Feedly also there. HubSpot, आप forms बना सकते हैं, आप बहुत सारी information को एक जगह synchronize कर सकते हैं. These are some of the names that I have just mentioned. We'll not get into the details because then it becomes more of a different subject to you use the tools of a social media. But I'm just mentioning there are other tools also to edit, to use different methods like, you know, you can use GIFs, you can use Boomerang. सबने करा होगा, fun के लिए किया होगा. But how do you use these things for information becomes very important. Fun, yes, but how it is important to communicate, and it's always better to utilize all the tools. हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं या एक एक्सेल शीट में कुछ काम करते हैं या एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं, जब तक हमें सारे टूल्स नहीं पता होते तब तक हम वो चीज अच्छे से बना नहीं सकते. So it is very important to know the details of a platform. सिर्फ फेसबुक पे जाके पोस्ट टाइप करके पोस्ट करने से आपको सब कुछ नहीं आ जाता. यू नीड टू गो इन डेप्थ, see what is available, how can you use those tools together and create something nice. That is also very important. The guideline is just giving you a picture के फेसबुक, क्योंकि मुझे पता है कि आगे हम कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेंगे तो ये सारी चीजें हो सकता है हमें जरूरत पड़े इन चीजों की. So we have guidelines. When I say guidelines, फेसबुक में विजुअल कंटेंट होता है टेक्स्ट से ज्यादा. उसका भी एक रूल होता है कि 20% रूल पे वो काम करता है. टेक्स्ट शुड बी 20%. सिमिलरली आई से ट्विटर का एक रूल है कि उस पे कैरेक्टर लिमिट होती है. वी से देयर इज अ साइज. आपका एक, जब भी आप कोई फोटो पोस्ट करते हैं, हम तो नॉर्मली पोस्ट कर देते हैं, बट अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी है, हर इंफॉर्मेशन का हर प्लेटफॉर्म के लिए एक स्टैंडर्ड साइज है, ताकि वो क्रॉप नहीं हो, ताकि वो डिस्टॉर्टेड ना दिखे, उस प्लेटफॉर्म के में फिक्स रहे. आपको पता है पिक्सेल्स, आपको मोस्ट ऑफ अस नोज व्हाट इज द पिक्सल, व्हाट इज द साइज, व्हाट आर द डायमेंशंस, एस्पेक्ट रेशियो, एवरीथिंग. सिमिलरली फेसबुक का एक अपना एस्पेक्ट रेशियो है व्हिच आई हैव मेंशन्ड हियर, 940 पिक्सेल्स बाय 788. यूजुअली इस पे काम करता है. 1200 बाय 628 पे भी काम करता है. इंस्टाग्राम सिमिलरली ऐसे बॉक्स फॉर्म में काम करता है. तो एनीथिंग दैट हैज टू बी पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम इज स्क्वायर. अगर आप रेक्टेंगल आइटम पोस्ट करते हैं कोई इंफॉर्मेशन का, तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. सो यू नीड टू नो कि लिंक्डइन का साइज क्या है, इंस्टा का साइज क्या है, फेसबुक का साइज क्या है. व्हेन यू वांट टू डू सोशल मीडिया प्रोडक्शन, यू नीड टू नो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस वेरी क्लियरली.
बहुत सारी चीजें बाय प्रैक्टिस आती हैं, बट बहुत सारी चीजें अगर पता होती हैं तो प्रैक्टिस में बहुत जल्दी काम आ सकती हैं. We say there is a difference between organic versus paid content or paid items. So we have disclaimers. हर जगह एक disclaimers. When I say disclaimers, there is a proper tag. Paid sponsorship, paid partnership, sponsored content. तो हर प्लेटफॉर्म के अपने रूल्स हैं, कहाँ क्या जाता है. Yes, there are individual rules, but there are rules pertaining to platform as well. एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. एक वीडियो बनाया किसी एक प्रमोशनल कंटेंट के लिए. सो स्क्रिप्ट ऐसी है कि इंट्रोडक्शन टू गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी फोन. इट्स नॉट एन एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट फॉर बाय द वे, इट इज एन इंटीग्रेटेड कंटेंट. When I say integrated content, it means branded content which is an information in a very fun and interesting manner, but it includes a promotion in it. Okay, so the script for social media is very cut to cut. जैसे हम स्टोरी बोर्ड बनाते हैं अपने किसी एपिसोड्स के लिए, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, वैसे ही यहाँ स्टोरी बोर्ड, यहाँ स्क्रिप्ट का कम काम होता है, स्टोरी बोर्ड का ज्यादा काम होता है. यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ वर्ड्स में, न कि लंबे सेंटेंसेस में. So पहले वीडियो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा. It's the whole explanation of the script. That's how we make a script for social media. There is a small clip. I don't know if it will be played or not. एक बार try करते हैं. I'll just try. अगर ये चलता है तो. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am, but there is no audio. Yeah, I think It's only having the visuals, or so there was no dialogue. There was only some music in the background, but a lot of things were communicated in this video. What is communicated? The whole information of a branded piece is communicated. The whole personality of the influencer. He is some famous influencer on Instagram, basically. So the whole personality, the whole communication is through actions. So there is less of words, there is more of caption working, and the whole idea is communicated. So this is just an example that I wanted to give you. Some of the learnings that after watching this, or maybe having the snapshot of the script we have is, sorry, something is happening. Okay, 3-4 second shots. एक shot 3 से 4 second तक रहता है, not much. क्योंकि उतना अगर एक ही चीज to break the monotony, अगर एक ही चीज 10 second तक रहेगी, swipe off. दूसरा next, क्योंकि next के options बहुत ज्यादा हैं social media पे. So your information should be very catchy. 2-4 second में आपने बात convey करी, next shot. So shots are very less duration shots. Frequent transitions are very, very frequent. Quick transitions. We have continuity. Either you make the continuity or you break the continuity. Why do we say make it or break it? We say make it or break it because continuity कभी-कभी रहे तो भी अच्छी लगती है, नहीं रहे तो और catchy लगती है. It depends on you to decide के ना रहने पर आपका वीडियो कितना कैची हो रहा है, या फिर आपकी बात कितनी कैची हो रही है, जो भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रहने पर भी प्रोडक्शन में वो कितनी कैची हो रही है. So either you make it properly or you break it properly. Then it short and duration of the overall piece should not be more than 60 seconds. तो बहुत ज्यादा हो जाता है, but 30 seconds is a 15 to 30 seconds is a very good duration when you explain it. But again, it all depends on the platform that you're going. Facebook,
allows more time. Facebook पे हम ज़्यादा देर तक वीडियो देख सकते हैं, but at the same time, same video for Instagram or for other Twitter, for that matter, won't work at all. So it also, the duration also depends on, but overall social media, yes, the duration really matters. The shorter, the better. Deliver more and talk less. कम बात करें तो ही अच्छा है, ठीक है. The other is storyboard form में होना चाहिए. Script, when I talk about the right side of my slide talks about script. So storyboard form में होना चाहिए. If you want to understand storyboard, maybe when we open up for the question answers, we can understand it more. Captions, caption होता है ना, one line नीचे दिया गया होता है, नीचे आ रहा होता है कि ये वीडियो इसके बारे में है, इसमें ये जान सकते हैं, whatever. That is your caption. Hashtag बहुत जरूरी होते हैं. क्यों जरूरी होते हैं? ताकि आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सकें. हैशटैग का पर्पस वो होता है कि आपका जो भी आपने प्रोडक्ट या जो भी आपने बनाया है वो आपके राइट टीजी तक पहुंचे. दैट इज व्हेन आवर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट. Hence hashtags become very very important. Post copy. Post copy का मतलब होता है पोस्ट, जो भी आप पोस्ट डाल रहे हैं, कोई भी आप वीडियो डालते हैं या कोई भी आप क्रिएटिव एलिमेंट डालते हैं तो उसके साथ कुछ लाइंस देते हैं, उसको पोस्ट बोलते हैं. हमने पोस्ट डाली है, हमने पोस्ट अभी पोस्ट किया मैंने, ऐसे बोलते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट. पोस्ट कॉपी मीन्स पोस्ट का टेक्स्ट. Copy is always referred to text in advertising world, and in social media world copy is whatever you write. The text is called copy. So post की copy क्या है? That becomes very important. Whenever you are posting something, the post copy becomes very very important. Supers. When we say super, this word is a very common word, but super क्या होता है? Super होता है आपके वीडियो या आपके क्रिएटिव या जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख के आ रहा है, that is called as super. While I am talking, मेरा नाम लिख के आ रहा है, that is a super. Right? So this is what it is. Next is writing in different platforms. When we say writing, like I said, we have already talked about this mostly. So like I said, Facebook, more number of words, but more explained. आप explain कर सकते हैं, आपके पास उतनी गुंजाइश है to explain that. Instagram short one-liner will work. Otherwise, cross, it won't work at all. Twitter, you have a character limit. You overpass the character limit, text will be cut. So you have a limited space to convey your information. LinkedIn, you can still do an explained piece on LinkedIn because most of the professions, business, you have more time to read about it if your piece is very interesting. So LinkedIn is again more explained. You can be as explained as possible on Facebook and LinkedIn as compared to the other platforms. So always note which platform type, what is the TG. You should not fluctuate with the TG. When I say fluctuate, I mean जब भी आपने कोई टॉपिक एक पर्टिकुलर टीजी के लिए तैयार किया है, आपका अपना एक प्लेटफॉर्म है जो एक पर्टिकुलर टीजी को केटर करता है, सीरियस जर्नलिस्ट को केटर करता है फॉर एग्जाम्पल, और आपने कोई ऐसा एलिमेंट डाल दिया जो सीनियर जर्नलिस्ट के लिए पुट ऑफ है, वो देखते ही अनॉय हो जाएंगे. तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं डालना है जो आपके टीजी को डेविएट करे. So do not fluctuate with your TG, do not fluctuate there, because then your communication piece, your information is a waste. Spell check बहुत जरूरी होता है. एक spelling, एक alphabet इधर से उधर is a wrong thing. मतलब आपका पूरा piece गलत हो जाएगा, आपकी पूरी imagery खराब हो जाएगी. So spell check is very very important. Sometimes we say कि हमने कोई एक वीडियो प्रोड्यूस किया, हमने डाला उसमें ए की जगह ई हो गया. अब वो ए की जगह ई करने के लिए हमें पूरा वीडियो दोबारा से सिस्टम पे डाल के एडिट करना पड़ेगा. अब हम सोचते हैं कि छोड़ो, एक ए का ई तो हो गया, डाल दो, बट दैट ए टू ई आपके हजारों में लाखों में आपके टीजी को ड्रॉप कर सकता है. So never think like that. Always be as careful, proper as possible. Use proper tags for proper reach. अगर आपने सही टैग्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपकी इंफॉर्मेशन सही जगह तक नहीं पहुंचेगी. कैसे टैग्स कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, that all will depend on your platform, that all will depend on your topic, that all will depend on your created page या created individual page you have जिससे पोस्ट हो रही है.
सो उस पे डिपेंड करती है. सो देन हेंस आई से क्रिएट योर ओन हैशटैग. इसका मतलब है क्रिएट योर ओन इंफॉर्मेटिव पेज based on what we have discussed. So अपना hashtag खुद बनाइए. That is what I mean. You can reach out to me at kanwar.sana@gmail.com for any further questions if they are unanswered in this session. So now leaving it to you for your questions or discussions. If not questions, I'm not forcing for any question, but we can talk. We can talk, we can interact. You want to know something, you want to explain something based on your experience. I would also like to listen from you if you have some experience, and if you have something to share with all of us, please feel free. It will be a session where everybody can pop up with their things and their stories to talk. Ma'am, what is TG? Sorry, TG is target group. टारगेट ग्रुप, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, दैट इज योर टीजी. हम उसको शॉर्ट फॉर्म में, बहुत सारे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करे होंगे, आई एम श्योर, आउट ऑफ माय बेसिक फ्लॉ. सो प्लीज फील फ्री टू आस्क. सो टीजी इज योर टारगेट ऑडियंस, योर टारगेट ग्रुप. Ma'am, I have a question. Yes, please. Yeah. So I was interning, and I used to work on social media brands. So at that time, there was this one thing that they used to tell us, was that you should always use hashtags which have a very small niche, because then your post will be discovered by fewer people. Like, don't use the very common hashtags, because फिर इतने सारे posts होते हैं उनमें से. But we used to notice that whenever we use the higher volume hashtags, it is getting noticed by a lot of people. Also, some social media people say that you should create your unique hashtag. So Hashtag. what exactly is the right thing to do? Yes, so the right thing to do is, there is no rule as such, but the right thing to do, depending on what you are posting, what platform are you posting for. For example, what type of platform was it? Was it for advertising? Yeah, for advertising and Instagram. For advertising and Instagram. So I'll take the same example. For advertising, if we say, so there is a product, that product is for a particular set of audience. And that product wants to, so for example, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया where you have that phone. फोन का एक अपना टीजी है, ठीक है, हर फोन का अपना एक अलग टीजी होता है. व्हेन आई से टीजी इज माय टारगेट ग्रुप, सो हर उसकी अपनी एक ऑडियंस होती है. तो जिस भी ऑडियंस को आपको पहचाना है, हैशटैग क्रिएट करना है, नहीं क्रिएट करना है. ऑडियो, या. So one is, Crystal, we say create your own hashtag if necessary. अगर आपको लगता है आपके ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एक जरिया चाहिए ना, आपको अपना डिस्कवरेबिलिटी तो भी तो बढ़ानी है. आपने पोस्ट डाली बट डिस्कवर नहीं हुई तो क्या फायदा. डिस्कवर करने के लिए आपको अपने ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा. पहुंचने के लिए आपको किस पे राइट करना है, आपको अपने हैशटैग पे राइट करना है. तो अगर हैशटैग अवेलेबल नहीं है, अगर आपको लगता है कोई राइट हैशटैग मेरे टॉपिक के अंदर जिस चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ है ही नहीं, तो आप क्रिएट कीजिए. अगर है तो कौन सा वाला हैशटैग ज्यादा बेटर रहेगा, इसी को हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं. Everything needs not of study. Nothing comes very easy कि हमने पोस्ट बनाया और पोस्ट कर दिया. नहीं, उसके पीछे बहुत स्ट्रेटेजी लगती है. आपको ढूंढना पड़ेगा कि मुझे बनाने की जरूरत है कि नहीं है. दूसरी चीज, अगर अवेलेबल है तो कौन सा मैं यूज करूं जो मेरे सही ऑडियंस तक पहुंच जाए. अगर वो यंग लोगों तक पहुंचने के लिए है तो मेरा हैशटैग कौन सा ऐसा होगा, किस हैशटैग में ऐसे वर्ड्स होंगे जो मेरा यूथ या मेरे जो यंग ऑडियंस है वो ज्यादा जल्दी पकड़ ले. आपके पास टाइम भी कम है, आपको पहुंचना भी एक लिमिटेड टाइम में है, तो आपको देखना है कि आपको किस पे सवार होना है. तीसरी चीज, छोटे हैशटैग. व्हेन यू से कि हमें बोला जाता था छोटे हैशटैग, दैट डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म. आपके पूरे प्लेटफॉर्म की भी तो कोई टीजी होगी. आप जिस कंपनी में XYZ कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रही थी, उस XYZ कंपनी का भी एक टारगेट ऑडियंस होगा. एक टारगेट ऑडियंस होगा आपकी कंपनी का, एक ऑडियंस होगा आपके अपनी पोस्ट का, जिसको आप जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं. तो टू रीच टू दैट टारगेट ऑडियंस ऑफ द कंपनी,
I think they must be using smaller hashtag. उनकी रिसर्च, उनकी एनालिटिक्स बोलती होगी कि हमारे ऑडियंस तक हम छोटे हैशटैग पे पहुंच सकते हैं. That is why you were told to use smaller hashtag. But in order to you make your post more discoverable and to increase the post views, you have to ensure what you have to use. ये आपको सोचना है, आपको स्ट्रेटेजी करनी है. There is no right or wrong way. There is, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट कीजिए, अवेलेबल है तो कौन सा बेस्ट सिलेक्ट करना है वो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ तक पहुंचना है. आपको जाना है बॉम्बे दिल्ली से, अब आपको वाया बैंगलोर जाना है या आपको डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है. टू सेव योर ओन टाइम यू हैव टू डिसाइड. राइट क्रिस्टल? Right. Ma'am, also, do you believe that on Instagram, since the limit is 30 hashtags, you should use all 30, or do you believe less is more? You use 2, but those 2 should be proper. Okay. वो 2 जो हो वो 30 की बराबर हो. समझ रहे हैं? आपका रिजल्ट क्या है? आपका एंड रिजल्ट है पहुंचना है. अब आपको फ्लाइट आपकी इंडिगो देर से पहुंचाती है, गोएयर देर से पहुंचाती है, आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड करता है, तो आप वो वाली चूज करो. All right. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. The rule doesn't say कि 30 के 30 यूज करने हैं. Sometimes more आपके ऑडियंस को ज्यादा हैशटैग कंफ्यूज भी कर सकते हैं. Don't confuse your audience. Like I said, don't fluctuate. हर किसी को टारगेट करने के चक्कर में आप राइट टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे. Right. There are few questions in chat box as well. Sumita Chakrabarti is asking how to create your own hashtags. Okay, so there is a method. Every platform has it. You use the right keywords. हमने एक चीज पढ़ी होगी कि keywords एक बहुत जरूरी चीज होती है. Keywords क्या होते हैं? जो आपके टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. आप वो 2-3 वर्ड्स निकाल लेते हैं. जैसे आप कोई भी आप ऐसे लिखते हैं तो उसका एक टाइटल होता है. आप टाइटल कैसे बनाते हैं? ताकि ऐसे या कोई भी न्यूज पीस है या कोई भी आर्टिकल है उसका एक टाइटल होता है. सिमिलरली उस टाइटल को अगर हम थोड़ा और छोटा कर देंगे तो उसके कीवर्ड्स बन जाते हैं. जब उसके 3-4 कीवर्ड्स बन जाते हैं तब उन कीवर्ड्स में से आप चूज कीजिए कि कौन सा 1 या 2 वर्ड आपके टॉपिक को या आपके क्रिएटिव को जस्टिफाई कर रहा है. पिक एनी 2. उन 2 पे बेस्ड आप हैशटैग बनाइए. और 2 ऐसे होने चाहिए जो बहुत कॉमन वर्ड होने चाहिए. नंबर 1, they should be very common when I say कि easy to discover. टफ इंग्लिश होगी, टफ वर्ड होगा, डिस्कवर नहीं हो पाएगा. सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, स्पेलिंग डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए एट द सेम टाइम, क्योंकि जितनी डिफिकल्ट इंग्लिश जितनी डिफिकल्ट स्पेलिंग उतना डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर. सो दो वर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए जिन पे आप पूरा अपना क्रिएटिव पीस या पूरा जो अपना आपका आइटम है वो बेस्ड है. और जितना लंबी लाइंस नहीं होनी चाहिए, पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए, 1 वर्ड या 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन. दैट इज हाउ यू क्रिएट इट. एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी फर्दर? Yes, there is one question from Zahoor Ahmed, and he is asking how to increase the organic reach of post in FB. Okay, organic reach. Organic reach आपकी कैसे बढ़ सकती है फेसबुक में? सबसे पहले आप ऐसा टॉपिक लीजिए जो आपकी ऑडियंस को बहुत इंटरेस्ट करता है. अगर मैं मासेस तक पहुंचना चाहती हूँ, फेसबुक इज यूजुअली मासेस, और मेरा कोई पेज है जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात करती हूँ. एक एग्जांपल दे रही हूँ. मेरा एक पेज है जिसमें मैं सिर्फ एजुकेशन की बात करती हूँ, और जहूर आपका एक पेज होगा जिसमें आप एजुकेशन के बारे में लिखना चाहते होंगे, एजुकेशन फॉर यूथ फॉर एग्जाम्पल. सो आप जो भी आइटम डाल रहे हैं वो आप यूथ के लिए डाल रहे हैं, तो आप जरूरी है आपके लिए कि आप यूथ से रिलेटेड ही उस पेज पे पोस्ट डालें. आप उसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं? आप उसको अलग अलग मीडियम में उस पोस्ट का लिंक डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आर्टिकल लिखा किसी एक प्लेटफॉर्म पे, बट मैंने उस आर्टिकल का लिंक पोस्ट कर दिया 2 और प्लेटफॉर्म पे जो क्लिकेबल है. तो मैं उस पे जब जाती हूँ, किसी भी क्रिएटिव पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे वहां ले जाता है.
So hyperlinking and embedding the links become very important here. So जब भी आप कोई उसका एक क्रिएटिव बनाते हैं या किसी भी पोस्ट के साथ कुछ एक टेक्स्ट विजुअल जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, उस विजुअल पे आप लिंक को एम्बेड कर सकते हैं ताकि वो क्लिक हो और इजीली आपने जहां पर भी इंफॉर्मेशन पोस्ट करी है वहां तक आपकी ऑडियंस पहुंच जाए. सो ऑर्गेनिक ऑडियंस पहुंचने का सबसे फर्स्ट थिंग, लाइक आई टोल्ड यू, इज द टॉपिक. इट हैज टू रियली बी रेलेवेंट टू योर ऑर्गेनिक ऑडियंस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. इसीलिए मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि जिस ऑडियंस के लिए जो लिखना है, बी वेरी टारगेटेड. दुनिया को रीच करने के चक्कर में हम फेल हो जाते हैं यूजुअली. सो वन इज दैट. द सेकंड थिंग इज एम्बेडिंग द लिंक्स. जहूर, आप लिंक्स को एम्बेड करना शुरू कर सकते हैं, उससे आपकी रीच बढ़ सकती है और उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप पोस्ट कर सकते हैं. क्लिकेबल होगा आपकी. जैसे मैंने अपना स्क्रीन देखा और मेरा एक क्रिएटिव आ रहा है, आपने उसको फेसबुक पे पोस्ट किया और आपने उसी पोस्ट को एक ट्विटर पे वही क्रिएटिव डाल के पोस्ट किया, बट उस लिंक पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ. सो यू कैन एम्बेड योर ओन लिंक्स ऑल्सो. ठीक है, that is also a possibility. So that is why I said use all the tools possible. Yes. Yes, one more question is there. It's from Abhishek, and he is asking how we will know that the hashtag we are going to use is effective or not. Very good question. So there is a thing called as SEO and analytics, which is a very technical side of our communication, the platform that we all come from. तो क्या होता है that those people, like we say, those experts, the SEO and analytics experts, आपके हर प्लेटफॉर्म में भी एक एनालिटिक्स आप देख सकते हैं अपनी पोस्ट का. if you use social media very often, तो आपको पता होगा कि आप एक एनालिटिक्स में भी जाके अपनी पोस्ट को कितने लोगों ने रीच किया, क्या हुआ, वो सारा डेटा देख सकते हैं. सो सिमिलरली आपको वो डेटा स्ट्रेटेजाइज करके बताता है कि आपका हैशटैग कितने % वर्क किया है कि नहीं किया है, कितने % वर्क कर सकता था. डिपेंड्स ऑन, जब आपके पास वो डेटा आता है ना. सॉरी प्रोफेसर भावना, हु वाज दिस पर्सन? This is Abhishek. अभिषेक. Yeah. हाँ. सो अभिषेक, जब आप डेटा देखेंगे अपनी पोस्ट का, उस डेटा में या पुरानी पोस्ट का भी डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी जगह से ज्यादा है, मेल है, फीमेल है, किस एज ग्रुप की है, या कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने कौन से रीजन से पढ़ा. ये तो मैं एक सुपरफिशियल एग्जांपल दे रही हूँ, बट डेटा और इन डेप्थ हो सकता था. तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम जो आइटम्स अब तक हमने डाले हैं वो कहाँ कितने सक्सेसफुल हुए हैं और उसकी पीक कहाँ गई है. तो जब आप वो ग्राफ्स और जब आप वो डेटा देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर मैं फीमेल्स प्लस एज ग्रुप 25 प्लस अर्बन पे ज्यादा करूंगा, ऐसा कुछ हैशटैग क्रिएट करूंगा, तो इट विल वर्क, बिकॉज योर पास्ट डेटा सेज कि ये चीजें ज्यादा वर्क करती है. सो स्टार्ट यूजिंग योर एनालिटिक्स टूल for a proper functioning. So if you don't know about it, you can learn online, or you can take help from some of your people, or if you are creating a page, you can hire somebody who is a SEO specialist whose job will only to tell you to analyze data and to tell you कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, basis studies of data. So for example, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक सर्वे करवाया दिल्ली में, जिसमें उनको ये पता चला कि प्राइमरी एजुकेशन का रेट इतना है और ड्रॉप आउट्स इतने हैं, और वट एवर डेटा लाइक वी सी. तो वो सर्वे करने के बाद पता चला ना, उसके बाद वो स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि नहीं, अब हमें फोकस करना है ड्रॉप आउट्स क्यों हुए पे. क्यों ड्रॉप आउट्स हुए विल ऑल्सो बी आंसर्ड बाय. So that is why analytics become very important in new age communication, be it in print, be it in radio. Everybody works on analytics these days, be it in social media these days.
analysis is very important. So you start analyzing your own post. If you want to be more strategically successful, start analyzing your own post. If you cannot, because that's again a different line altogether of software and SEO analytics, you can take help from a specialized person and take help from that person to give you some insights. If they give you some insights, you can work on those 4-5 insights and make your platform more successful. Anyone else want to ask question? Otherwise, we will then conclude this session. If anybody want to, they can unmute themselves and can directly ask. Or you can just write down in chat box as well. Yes, ma'am. Choice is yours. Yeah. Hello. Yes, who's that? Introduce yourself and then ask question, please. This is Kanhaiya Kumar Singh, ma'am. Very good evening, ma'am. Ma'am, I want to ask that how will we know that ensure that we are accurate or our that content is accurate and factual? Okay, how do you ensure that it Yes. is factual? See, factual तो आप ensure तभी करेंगे कि आपके पास सही source से वो information आई है कि नहीं आई है. फैक्ट आप तभी वेरीफाई कर सकते हैं जब आपको पता है कि वो जो भी आप फैक्ट लिख रहे हैं वो सही सोर्स से आपके पास आई है नहीं आई है, डायरेक्ट सोर्स से नहीं आई है कि नहीं आई है, करेक्ट है. सो वन इज द बैक एंड चेकिंग कि आपने कुछ न्यूज पोस्ट करी. चलो मुझे नहीं पता कि आपका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, मैं न्यूज का एग्जाम्पल लेती हूँ. कोई एक घटना हुई और आपको पता चला किसी के थ्रू. सो आपको ये इंश्योर करना है, जो जर्नलिस्टिक बेसिक्स हैं, कि आपका सोर्स क्या है, कितना ऑथेंटिक सोर्स है आपका बिफोर पोस्टिंग द न्यूज. सो दैट इज व्हाई वी पीपल हैव दिस बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो कितना सोर्स वाइज ऑथेंटिक है कि नहीं है, या हम उसमें सोर्स को स्पेसिफाई कर दें. सबसे बेहतर होता है कि अगर आपको सोर्स ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक लगता है तो आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि ये इससे बात करने पर आधारित है या इनसे बातचीत पर हमने ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाली. सेकेंड थिंग, करेक्टनेस आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं? लाइक आई सेड, मैंने कुछ स्लाइड्स में बताया था कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप लिख रहे हैं. स्पेल चेक बहुत जरूरी है. आप जो लिख रहे हैं आपके शब्द आपने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, इनकरेक्ट तो नहीं है, आपकी मात्राएं गलत तो नहीं है, आपकी स्पेलिंग गलत तो नहीं है, आपने जो सेंटेंस लिखा है पूर्ण विराम लिखा है कि नहीं लिखा है, फुल स्टॉप है, कॉमा है सही जगह पे. बेसिक हाइजीन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपकी पोस्ट सही या गलत लगती है. पहली नजर में जो सोशल मीडिया ऑडियंस होती है ना, पहली नजर में पहचान जाती है कि ये पोस्ट फर्जी है या ये पोस्ट अच्छे किसी बंदे ने लिखी है या इस पे भरोसा किया जाना चाहिए. क्योंकि आपने कैसा, पहले क्या होता था, राइटिंग सुंदर होती थी तो लगता था अरे ये सीरियस है या इसने बहुत मेहनत करी अपनी राइटिंग पे या जो भी. अभी क्या है कि अगर आपने पंक्चुएशन, शब्द चयन आपका बहुत अच्छा है, आपके पंक्चुएशंस अच्छे हैं, आपने स्पेलिंग ठीक लिखी है, ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन को और ऑथेंटिक बनाती है. सो फर्स्ट इज योर बैकग्राउंड चेक, सेकंड इज हाउ यू प्रेजेंट इट. उससे आप सही गलत का बहुत अंदाजा लगा सकते हैं. कन्हैया, कुछ मिस किया, कुछ और ऐड करना है क्या? मैंने सही आंसर किया नहीं किया, आई डोंट नो. No, actually ma'am, I am satisfied with your answer, ma'am. Thank you. Thank you. Yes. Yes, Zahur ji, you want to ask some question? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah, ma'am. This is Zahur from Kashmir. I want to. Day before yesterday, I posted a link on our Facebook page, and the reach was not too much, na. And after that, I posted images of that which I have clicked that same post, but it reached within 12 hours. It reaches 29K, 29,000 was its reach. Now I want to know from your good self that what will be the better option, to post the link of the same news from any newspaper, or to post the pictures, 2-3 pictures, and write some post copy 2-3 lines? What is the better option to reach more and more people? You're saying, because I have experienced that. Okay, you have experienced that when you have used the link, तो आपकी पोस्ट ज्यादा पहुंची थी, जब आपने पिक्चर पोस्ट करी तो कम पहुंची. When I posted the pictures, it reached more audience.
When I posted the same link of particular pictures, particular news item from a newspaper, for example, it reached lesser this audience. Okay, so one basic Because they say pictures speak more than words. Now it is okay, yes. So basic understanding, basic मतलब मैं without Exactly. getting into the details, मुझे जो Exactly. सामने दिखेगा वो मैं Yes. ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगी. अगर मुझे Yes. आपने कहा कि आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, मैंने पूछा जरूर मुझे जानना है कि श्रीनगर कैसा है, तो आप Exactly. मुझे एक लिंक भेज दें और बोले मैम आप इस लिंक पे जाइए और देख लीजिए, तो शायद Yes. मैं सोचूंगी कल देखूंगी, जब टाइम Yes. होगा तब देखूंगी. या फिर आपने मुझे एक फोटो खींच के भेजी श्रीनगर की व्हाट्सएप पे और मैंने देखा अरे ये तो बहुत सुंदर जगह है, तो क्या ज्यादा इम्पैक्टफुल है मेरे लिए, लिंक Yes, या ma'am, फोटो जो picture. आपने भेजी है. सो वेरी Picture. बेसिक एग्जांपल. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइमिंग. जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार बोल रही थी, Consistency, yes. टाइमिंग. किस समय पे पोस्ट किया है, Exactly. becomes Importance of very the item. Yes. yes, Importance. टाइम पे, क्योंकि उस Timeliness. time Yes. Timeliness. हो सकता है जिस टाइम पे आपने लिंक पोस्ट किया उस टाइम पे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें Exactly. ऑनलाइन मीडिया में घूम रही हो, और हो सकता Exactly. है आपने Exactly. जब दूसरी पोस्ट डाली उस टाइम पे थोड़ा सा शांत हो और आपकी पोस्ट ज्यादा विजिबल हो. Exactly. Timing become very important. Yes. Yes, ma'am. So we have more hands here. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Hello. Please, Hello. Girish ji, you want to ask something? Yes, ma'am. Have Namaskar. question? Yeah. My name is Grishan Sharma. I'm speaking from Uttarakhand, Kasipur, Uttarakhand. Hello. Hello. Yeah. Girish ji बोलिए. हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस समय भी जितने भी अभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया हम जो आज के समय में देख रहे हैं, और मैक्सिमम सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया हो गया है. तो कई बार हमने ये देखा कि सोशल मीडिया में जो पोस्ट इन प्रिंट मीडिया में कोई न्यूज आई और उस प्रिंट मीडिया में जो न्यूज आई है उसको हमने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया. मान लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर की न्यूज है, फॉर एग्जांपल दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, उसका जो भी पीडीएफ या उसका ई एडिशन जो भी हम कह सकते हैं या कोई ग्राफिक्स है उसका. और इसी तरीके से आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई न्यूज है, जी न्यूज है, कोई भी चैनल्स है, आज तक है, तो अगर उनका कोई भी वीडियो है न्यूज का तो वो पोस्ट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आइदर ऑन जो भी है ट्विटर है या यूट्यूब है या जो भी इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे पास, फेसबुक है. तो एक चीज ये देखा गया मैम कि जो इस तरह की न्यूज आती हैं फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ प्रिंट मीडिया और फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबिलिटी होती है अगर पीपल उस न्यूज को व्यू करते हैं. लेकिन अगर कोई सिंपली अगर कोई न्यूज डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अगर कोई इसको पुट अप करता है तो उसकी रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी कम होती है. तो मैं मैम कि इसके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे कि लोग सोशल मीडिया पे ये रिलायबिलिटी क्या है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आज के दौर में भी प्रिंट मीडिया रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें, ऑथेंटिसिटी की बात करें अगर न्यूज के या इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं डिपेंड्स ऑन प्रिंट मीडिया. इसका मैं एक गिरीश, यू डन विद योर क्वेश्चन, मैं जवाब दूं? जी मैम, थैंक यू. So one very simple way of looking at it is कि जो आपके टीवी और प्रिंट के जो मीडियम है, जैसे भास्कर है आपका, जागरण है आपका, हिंदुस्तान है, अलग अलग वो एस्टैब्लिश्ड न्यूज हाउसेज हैं, एस्टैब्लिश्ड, जिनको माना जाता है देश में. सो ऐसे बहुत सारे हैं जो टीवी न्यूज में, इलेक्ट्रॉनिक में माने जाते हैं. ऐसे ही सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज के चैनल हैं जो ऑथेंटिक, जो अपने आप में न्यूज के लिए माने जाते हैं. सो सोशल मीडिया में वन ड्रॉबैक इज कि वो सब, हर कोई कुछ भी लिख सकता है. वहां ये है, आपको चूज करना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करनी है, या आपको चूज करना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको इसकी लेनी है या उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है. सो सेकेंड थिंग इज, आपने मुझे कहा कि सोशल मीडिया पे अगर कोई न्यूज पोस्ट होती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं होती जितनी एक टीवी पे आई हुई न्यूज या किसी एक पब्लिकेशन की न्यूज की होती है. क्योंकि हमारी आज के जो हमारी इंडियन जनता है उसके दिमाग में न्यूज का करेक्ट सोर्स कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक या न्यूज़पेपर एजेंसीज हैं, राइट. सोशल मीडिया अभी भी एक नया प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स, न्यूज एजेंसीज, टेक्स्ट वाली या वीडियो वाली अवेलेबल हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं.
सो ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिसिटी कम है, ऐसा इसलिए आपको लगता है क्योंकि हम अभी उस फेज से उस फेज में जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक लास्ट 2 इयर्स में मेनली हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट को ग्रैस्प करने वाले लोग थे, अब हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, इसलिए हमें जो चीज हमें पहले से पता है हम उसको देखने की पहले कोशिश करते हैं रेदर देन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सोशल मीडिया पे डायरेक्ट आती है उसको। धीरे धीरे क्या होगा गिरीश कि हम सोशल मीडिया पे ये देखने लग जाएंगे, जितना हम यू कंज्यूम करेंगे उतना हमें पता चलेगा कि सोशल मीडिया पे हमारा रेलेवेंट न्यूज पोर्टल कौन सा है और कौन सा नहीं है। आप अगर मैं आज की डेट में आपसे पूछूं कि आपका हिंदी अखबारों में या इंग्लिश अखबारों में आप किसको पढ़ते हैं, तो आपकी 10 में से आपकी एक चॉइस होगी या 2 चॉइस होंगी, राइट? वैसे ही सोशल मीडिया में कल को आप अपनी 2 चॉइसेस बनाएंगे। जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे, जैसे जैसे आप इस दुनिया में आएंगे सोशल मीडिया की, आपको पता चलेगा कि ऑथेंटिक न्यूज एजेंसीज जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं वो कौन सी है। सबसे पहला चेक होता है उनका बैकग्राउंड चेक कि किसने पोस्ट किया है, सोर्स क्या है, आया कहाँ से है। आप पढ़ते हैं अखबार में, खबर पढ़ते हैं, कहाँ से आई है, पीटीआई से आई है, एएनआई से आई है, होता है ना, न्यूज का एक सोर्स होता है ना, या अखबार की अपनी संवाददाता ने दी है, सबको पता होता है। वैसे ही सोशल मीडिया पे भी पोर्टल्स हैं जिनकी अपनी ऑथेंटिक न्यूज एजेंसीज हैं, वीडियो, ऑडियो, प्रिंट, तीनों फॉर्म में अवेलेबल हैं। आप देखिए, आप जरा इस आफ्टर दिस सेशन आप देखिए टॉप 10 ऑनलाइन सोशल मीडिया न्यूज एजेंसीज इन इंडिया, you will find out the information for sure। और फिर आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपकी अपनी 2-3 choices बन जाएंगी towards the end। Thank you so much, and I'm so happy that all participants are really very active, but we are just running out of time, so we can just take one more question, and actually Nilanchal Nayak is requesting again, so Nilanchal ji, over to you. You may ask your question. So this is the last question. Thank you very much, ma'am, giving me this opportunity. Ma'am, myself Nilanchal Nayak. I am from Institute of Media Studies, Bhubaneswar. Ma'am, I have a question regarding the Instagram uploading that I have seen. I have many times made the videos programs live, and it shows no time limit, you know, and while uploading a saved video, it has many times shown the limitation of that video, the length of the video. So what about that one, ma'am? Actually, can we upload the saved video for a longer time, meaning of about 10 minutes or 15 minutes, that video, if it would be, then can it be uploaded in the Instagram or not? I have some problem. That's my question, ma'am. Yes, Please clear me. so I'll just quickly answer that। so हर प्लेटफॉर्म का अपना एक रूल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि हर प्लेटफॉर्म की एक कैरेक्टर लिमिट होती है, एक स्पेस लिमिट होती है, एक साइज की लिमिट होती है। वैसे ही जब आप लाइव जाते हैं, बीट ऑन इंस्टाग्राम और बीट ऑन फेसबुक, उस लाइव की लिमिट नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसकी लिमिट होती है क्योंकि वो स्पेस लेता है। लाइव रियल टाइम में काम करता है, आपके डेटा से काम करता है, जबकि आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो एक समझ रहे हैं, तो डिपेंड्स ऑन द स्पेस ऑक्यूपाइंग वर्सेस रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ठीक है, so that is the basic difference। so and every platform has a limit of uploading the video। yes Yes, ma'am, thank you very much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Now I'll request Professor Subhash Dhulia sir to kindly conclude this session, and Dhulia sir. Thank you very much, Sana, for you, your very insightful presentation. And I'm sure that the participants of this interaction, they got a very good idea that how social media can be used very effectively. Sana has mentioned certain very important points. First is the authenticity of the information, the source of information. Today, in fact, we have access to huge amount of information. And there are a number of studies that indicate that in social media, almost over 70% informations are either fake news or disinformation or misinformation and half-truth. So this has become a major challenge for every professional, not only media professional, but in every area, that how to verify the authenticity of the news. So that's one thing important. And then Sana also talked about that in the data. Now, this is the age of data now. Now, data has become very important.
So one thing is that data visualization is important. When we collect huge amount of information, then you convert that into a package. Package can be can use the different tools of the multimedia packages that you can use video, audio, text, animations, and graphics. So that data visualization has become now very, very important. And one thing I think Girish raised one point about the newspaper and the television channel. You see, traditionally, this was the news of verification. News of verification was a traditional concept that every information used to be verified from one source, a second source, a third source. So a reporter was expected to convince himself that now this information is authentic. So after the advent of the 24/7 television channel, this concept of breaking news came into existence. And then this journalism of verification is now virtually dead today as far as television channels are concerned, because they don't have time to wait for the story. The moment they get the story without adequate verification, they immediately broadcast it because there is market competition. Second is in print media, is true, they have plenty of time to verify the information because the daily newspaper, it has a cycle of 24 hours. So a reporter has time to verify the information. In television channel, because of this breaking news concept, things have now changed now. So this is generally we call in journalism that journalism of verification and journalism of assertion now. Thank you so very much, sir, for your concluding So remarks. that's one thing and, that print media is Yeah. as compared to television. And one thing I think this creativity is now very, very important. The creativity has become very important because in next few 5 or 10 years, artificial intelligence and algorithm, they will take over a number of things that we are doing today. For example, now in medical profession, there are studies that almost 75% of the job that doctors are doing today will be taken over by the artificial intelligence. आपको सारा डेटा पूरी मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट हो जाएगी, वो उसमें फीड कर दी जाएगी, बचपन से लेकर आज तक आपको क्या क्या हुआ, और आपको कोई बीमारी होती है तो आपको इंफॉर्मेशन फीड करनी है, एंड देन एल्गोरिथम विल प्रिस्क्राइब कि आपको क्या क्या टेस्ट लेने हैं, और वो भी प्रिस्क्राइब कर देगा कि आपका डायग्नोस क्या है. तो 80% functions of the medical science will be taken over by the AI. यही फिर चीज मीडिया में भूलनी जा रही है. So in next 5-10 years, the entire job profile in every sphere is going to change, and you have to acquire new skills. And creativity is something which machine cannot do. Creativity is something that technology cannot do. And creativity means you have to think out of box. Now this is now the age of the data, and it's the age of creating new ideas, innovations and new ideas. So I think we have to focus on data visualization, creating new ideas, introducing innovations. That's how we can be better than technology. So this conflict between man and the machine is the answer only is that we ought to be creative. So I will conclude here. Thank you very much, Sana, once again for your very, very insightful, very informational, educational presentation. Thanks. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you so everyone. much, sir, for your concluding remark. And I'm thankful to Sana ma'am for this wonderful session and highlighting on the tools and techniques of social media, which is direly required in this new age. And I'm thankful to all lovely participants for their active participation. And last but not the least, I'm thankful to our organizing committee, to Dr. Saket Raman sir, to Saket Bharadwaj ji. एंड बोलते हैं ना कि ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो नींव है, और ये जो है बिल्कुल पीछे पर्दे के पीछे काम कर रही है, और एंडलेस एफर्ट्स हैं इसके. सो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. Tomorrow we will have one more session. Tomorrow we have one more session. Bhavna just informed them about that also.
Yes, so tomorrow at the same time at 6 p.m. we are going to have one more session of very renowned journalist Shweta Kothari ma'am at 6 p.m. and a link will be shared with you guys along with the poster. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. everyone. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.